Hello students. So today we will start 8th chapter, that is useful and harmful microbes. Okay. तो अभी माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, ओके, बैक्टीरिया, पैरासाइट, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको माइक्रोब्स बोलते हैं. सो व्हाट इज मेंट बाय माइक्रोब्स? ऑल द बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरसेस आर द माइक्रोब्स. एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक? माइक्रोब्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सो माइक्रोब्स कैन बी यूनिसेल्यूलर, मतलब सिंगल सेल, कैन बी मल्टी सेल्यूलर, और दे कैन बी यूजफुल और हार्मफुल. ओके, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं. सो हाउ डिड यू ऑब्जर्व माइक्रोब्स? माइक्रोब्स हम लोग कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? यू कैन ऑब्जर्व माइक्रोब्स अंडर द माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. सो वी विल सी यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं. ओके, सो first we will see useful microorganisms. So what is useful microorganism? That is lactobacilli. Okay, now see, smear a drop of fresh buttermilk on a glass slide, stain it with methylene blue and put a cover slip over it. Observe the smear under 10x objective of compound microscope and then with more powerful 6x objective. Did you notice the blue rod shaped organism moving around? They are called lactobacilli, a kind of bacteria. Okay, they are minute and rectangular in shape. Lactobacilli are anaerobic. Anaerobic matlab they can live without oxygen. Okay, anaerobic bacteria, that is they can produce energy without use of oxygen. They can produce energy without use of oxygen. Okay, anaerobic matlab they can live without oxygen and produce energy without use of oxygen. Okay, सो लैक्टोबैसिली अगर हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो यू विल सी लैक्टोबैसिली लाइक दिस. सी इन द स्ट्रक्चर, लैक्टोबैसिली कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऐसे दिखेगा. ओके, इट इज़ अ रॉड शेप स्ट्रक्चर. ओके, सी हाउ इज योगर्ट फॉर्म फ्रॉम मिल्क? व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन दिस प्रोसेस? योगर्ट और कर्ड मिल्क से फॉर्म होता है, राइट? कर्ड मिल्क से, दही मिल्क से फॉर्म होता है. कैसे फॉर्म होता है, एग्जैक्टली क्या होता है इस प्रोसेस में? वी विल सी दैट. नाउ सी दैट द लैक्टोबैसिली कन्वर्ट लैक्टोज शुगर ऑफ मिल्क. नाउ व्हाट इज लैक्टोज? लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज इज शुगर ऑफ मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन. ओके, conversion of lactose, that is sugar of milk, into lactic acid is called as फर्मेंटेशन. अब ये लैक्टोबैसिली क्या करता है? लैक्टोबैसिली क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा लैक्टोज को किस में? लैक्टिक एसिड में, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन, राइट? एज अ रिजल्ट द पीएच ऑफ मिल्क डिक्रीजेज कॉजिंग कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन. फर्मेंटेशन होता है एंड फिर फर्मेंटेशन होने के बाद में क्या होता है? मिल्क का जो पीएच है वो डिक्रीज होने लगता है. पीएच डिक्रीज होने के बाद मिल्क जो है वो कोएगुलेट मतलब गाढ़ा होने लगता है. ओके, क्लॉट होने लगता है या फिर कोएगुलेट होने लगता है. दस मिल्क प्रोटीन आर सेपरेटेड फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिल्क. एंड बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन क्या होता है? ये जो मिल्क के जो प्रोटीन्स है वो सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिल्क. दिस इज व्हाट हैपन्स व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू द योगर्ट. ओके, समझा? सी, लैक्टोबैसिलाई जो बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलाई क्या करेगा? मिल्क का शुगर लैक्टोज. ओके, लैक्टोबैसिलाई क्या करेगा? लैक्टोज को कन्वर्ट करेगा किस में? लैक्टिक एसिड में. जिसको इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन. एंड फर्मेंटेशन की वजह से क्या हो जाता है? मिल्क का जो पीएच है, पीएच डिक्रीज हो जाता है. एंड डिक्रीज होने के बाद मिल्क जो है कोएगुलेट होना चालू करता है. क्यों कोएगुलेट होता है? क्योंकि मिल्क के जो प्रोटीन्स है वो सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिल्क. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस milk changes into yogurt. Okay, yogurt has specific sour taste due to lactic acid. Lactic acid की वजह से yogurt has specific sour taste. The low pH destroys harmful microorganisms present in the milk. And pH कम होने की वजह से जो भी harmful microorganisms मिल्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ओके, आफ्टर दिस वी विल सी यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिलाई. लैक्टोबैसिलाई की यूजेस क्या है? वेरियस मिल्क प्रोडक्ट्स
like yogurt, buttermilk, ghee, cheese, shrikhand, etc. are obtained from fermentation of milk. ओके अभी हम लोगों ने देखा मिल्क कैसा फर्मेंटेज होता है, लैक्टोज जो है मिल्क शुगर वो कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फर्मेंटेशन। एंड फर्मेंटेशन किसके वजह से होता है, लैक्टोबैसिलाई की वजह से। लैक्टोबैसिलाई क्या है, बैक्टीरिया। सो सी वेरियस मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक योगर्ट, बटरमिल्क, घी, चीज, श्रीखंड एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। ओके लैक्टोबैसिलाई मिल्क फर्मेंटेशन करेगा एंड वी विल गेट ऑल दिस मिल्क प्रोडक्ट्स। ओके lactobacilli fermentation is useful for large scale production of cider, coca, pickles of vegetables, etc. Okay, then lactobacilli and some other useful microorganisms taken together are used to treat abdominal discomfort. लैक्टोबैसिलाई के हेल्प से वी कैन ट्रीट एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट मीन्स एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ऑल दिस। ओके लैक्टोबैसिलाई के हेल्प से, with the help of lactobacilli and some other useful microorganism, we can make a medicine. It is useful in medical science or pharmacy also and can treat abdominal discomfort. And you can have buttermilk or yogurt also if you have abdominal discomfort. Buttermilk and yogurt can also treat abdominal discomfort. Why? Because it has lactobacilli in it. Okay, बटर मिल्क के अंदर लैक्टोबैसिली होता है, बटर मिल्क और योगर्ट के अंदर लैक्टोबैसिली होता है, इसलिए इफ़ यू हैव एनी एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट यू कैन हैव योगर्ट और बटर मिल्क विच कैन रिलीव द एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट. Lived fodder offered to domestic cattle like cows and buffaloes is fodder fermented with the help of lactobacilli. Cows and buffaloes को जो फूडर देते हैं वो फूडर्स भी fermented होते हैं with the help of lactobacilli. The lactobacilli fermentation process is used to make wine and some types of breads. Okay, lactobacilli is also used to make what, wines and some types of breads. Okay, so next is rhizobium, that is symbiotic bacteria. So we will see what is symbiotic bacteria and what do you mean by symbiosis. Okay, you see role and importance of rhizobium, which is symbiotic bacteria. Now rhizobia क्या करेगा, supplies nitrate, nitrite and amino acids to plants. Okay, this bacteria will supply what, nitrate, nitrites and amino acids to plants, and in return it will get energy in the form of carbohydrate. ये जो राइजोबिया है ये क्या करेगा, इट विल सप्लाई नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमाइनो एसिड्स टू प्लांट एंड रिटर्न में क्या लेगा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। रिटर्न में ये प्लांट से लेगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड सच अ बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज सिम्बायोसिस. ओके राइजोबिया नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमाइनो एसिड्स को सप्लाई कर रहा है एंड रिटर्न में प्लांट से वो क्या ले रहा है, कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दिस बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज symbiosis. Rhizobia produces nitrogenous compounds from atmospheric nitrogen. However, from this process of nitrogen fixation, they needs leguminous plants like beans, sweet pea, soybean, etc. as a host. So beans and pulses are rich in protein due to nitrogenous compound made available by rhizobia. Okay, see here rhizobia क्या produce करेगा, nitrogenous compound from एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. ओके एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन मिला है राइजोबिया को वो से क्या प्रोड्यूस करेगा, नाइट्रोजनस कंपाउंड. However, for this process of nitrogen fixation they need leguminous plants like beans, sweet pea, soybean as a host, and because of this beans, pulses इसमें क्या होता है, they are rich in protein and others are rich in nitrogen. After harvesting the leguminous plant or crop, the leftover roots and other plants part are deliberately dumped in the farm soil to maintain its bacterial population. Okay, the use of rhizobium has helped to reduce the use of chemical fertilizers. See, if you use a rhizobia is present in other plants, right? So the leguminous plants are present. rhizobia कहाँ present रहता है, leguminous plants यहाँ पे हम लोगों ने देखा है. which are leguminous plants?
like beans, sweet pea, soya beans. Okay, they are leguminous plants. So rhizobia का किस में present रहता है? Beans, sweet pea and soya beans में, right? So these leguminous plants are dumped. ये leguminous plants कहाँ पे dump कर देते हैं? Into the another farm. Okay, to maintain what? Bacterial population. And इसके वजह से chemical fertilizer का use reduce हो सकता है with the help of if you use rhizobia and leguminous plant which is present in leguminous plant. Okay, the use, okay, it has also helped to reduce expenses on fertilizers and thus works to benefit the benefit of farmers. So next is yeast. So there is an activity, we will discuss the activity. So bring a active dry yeast from market, mix a spoonful of yeast, 2 spoonful of sugar with sufficient quantity of lukewarm water in a bottle. एक बॉटल लेना है, उसमें ड्राई ईस्ट डालना है एंड 1 स्पून ऑफ ड्राई ईस्ट एंड 2 स्पून ऑफ शुगर. ओके, 1 स्पून ड्राई ईस्ट डालना है और 2 स्पून क्या डालना है? शुगर इन ल्यूकवार्म वाटर. ओके, फिक्स अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट बलून ऑन द माउथ ऑफ दैट बॉटल. ओके, फिर उस बॉटल के माउथ पे यू हैव टू फिक्स अ ट्रांसपेरेंट कलरलेस बलून. ओके, what changes do you observe after 10 minutes? Mix lime water with the gas accumulated in the balloon. Okay, collect that lime water in a beaker and observe it. What do you notice? See, if you do this activity, if you put a spoonful of yeast, 2 spoonful of sugar in a lukewarm water in bottle and fix a colorless transparent balloon on it, then after 10 minutes you will see that मिक्स लाइम वाटर विथ गैसेज आर एक्यूमुलेटेड इन द बलून. बलून के अंदर क्या गैसेज और मिक्स लाइम वाटर एक्यूमुलेट होता है. तो वो वाटर हम लोगों को कलेक्ट करना है एंड यू हैव टू सी व्हाट डू यू नोटिस इन दैट. ओके, टेक अ ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम द बॉटल ऑन अ ग्लास स्लाइड, पुट अ कवर स्लिप ओवर इट एंड ऑब्जर्व इट अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. स्टोर द सोल्यूशन इन द बॉटल केयरफुली. Do you see the colorless oval cells of yeast on the slide? Some of these cells may have some round bodies attached to them. These are new daughter cells of yeast in the process of formation. Now see in this diagram. You will see yeast. You will see yeast like this in the compound microscope, and this is the bud. Okay, this structure, new structure is called as bud, which is formed with the help of asexual reproduction. Okay, the method of asexual reproduction is called as budding. Formation of new bud from pre-existing bud. Okay, ये पहला वाला yeast है, इससे जो new yeast form होता है, new bud form होता है, उसको हम लोग, उस process को हम लोग क्या बोलते हैं? budding, which is type of asexual reproduction. Okay, yeast is heterotrophic fungal microbe that grows on carbon compound. Okay, yeast is unicellular fungus with 1500 different species in existence. Yeast is what? It is unicellular, single cell है, and it is a fungus with 1500 different species in existence. The yeast cell is eukaryotic type of cell. Okay, eukaryotic and prokaryotic, there are 2 types. So yeast is what? Yeast is eukaryotic type of cell. In above experiment, yeast grows and multiplies very quickly due to carbon compound in the sugar solution. Yeast क्यों grow होता है very quickly? Because of what? Carbon compound in the sugar solution. Sugar solution में क्या है? Carbon compound है, and because of that the yeast grows very quickly, multiplies very quickly. In the process of obtaining nutrition, yeast cell convert the carbohydrates in that solution into alcohol and carbon dioxide. In the process of what? Obtaining nutrition, yeast cell converts the carbohydrate in that solution into alcohol and carbon dioxide. yeast को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन. ग्रो करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए yeast को न्यूट्रिशन चाहिए. तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? yeast will convert carbohydrate. जो सोल्यूशन में कार्बोहाइड्रेट है, वो कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करेगा? into alcohol and carbon dioxide to get what? न्यूट्रिशन. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन. ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ ब्रेड इज फॉर्म. फाइंड आउट how to use the solution
Find out how to use the solution prepared in the above experiment to make bread. Follow the recipe and make the bread. Find out and note down the reasons why dough rises and make bread spongy. Now see, do you know, often alcohol is produced along with sugar in sugar factories. Okay, in sugar factories alcohol is also produced along with sugar. Now molasses is produced from sugar cane. Molasses is remaining of sugar cane juice. Okay, it is rich in carbohydrate. Molasses fermented with the help of yeast called as Saccharomyces. Molasses किससे produce होता है? With the help of yeast called as Saccharomyces. In this process, ethanol C2H5OH alcohol is produced as primary product and ester and other alcohol are produced as secondary product. Okay, ये process में what happens in this process? Ethanol is produced as what? Primary product, and ester and other alcohols are produced as secondary products. Okay, next is spirit and other alcohols can be obtained from ethanol. Ethanol, which is primary product which we have got here, you will get spirit and other you can obtain spirit and other alcohols from ethanol. Ethanol is also a smokeless and high quality fuel. Okay, besides molasses, maize, barley and other grains are also used for industrial production of ethanol. Glucose and fructose, the sugar present in the grape juice, are also fermented with the help of yeast to produce alcohol, which is used for making wines. Okay, glucose और fructose किस में present होता है? The sugar which is present in grape juice. Grape juice में glucose और fructose present रहता है. With the help of this glucose and fructose, you can make alcohol, which is used for making wines. The next topic is antibiotics. Antibiotics. Now what is antibiotics? Antibiotics means the medicines or the biotics which helps to kill the harmful bacteria. Okay, antibiotic means these are the medicine which kills the harmful bacteria. So carbon compounds obtained from some bacteria and fungi for destroying or preventing the growth of harmful microorganisms are called as antibiotics. See, carbon compounds obtained from some bacteria. Antibiotics are produced from bacteria itself, from good bacteria, from some bacteria and fungi for destroying or preventing the growth of harmful bacteria is called as antibiotic. Antibiotic, a discovery of 20th century, have brought about a revolution in field of medicine. Okay, even a disease like tuberculosis means TB, has been almost completely eradicated from some centuries because of what? Because of use of antibiotic. Antibiotic therapy is given to tuberculosis patient. Okay. Now, antibiotics mainly act against bacteria. Some antibiotics can destroy protozoa also. Protozoa means parasites. Antibiotics mainly किसके अगेंस्ट काम करते हैं? बैक्टीरिया के अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट नहीं. So but they can also act against some protozoa also. Some antibiotics are useful against a wide variety of bacteria. They are called as broad spectrum antibiotic. So antibiotics के दो टाइप से, अगेन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. तो एंटीबायोटिक्स जो वाइड वैरायटी बैक्टीरिया पे वर्क करते हैं या फिर वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. एग्जाम्पल इज एम्पिसिलिन, एमॉक्सिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एक्सेट्रा. ओके. So when pathogen means microorganism. So when the pathogen cannot be identified even through the symptoms of disease are visible, broad spectrum antibiotics are used. Okay. At the time जब symptoms है, जब only symptoms है, like you have fever, cold, cough, you have only symptoms but the disease is not identified. मतलब वो पैथोजन क्या है जिसके वजह से डिजीज़ हुआ है, वो पैथोजन अगर नहीं पता है, लैब टेस्ट के वजह से अगर वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द पैथोजेंस, एट दैट टाइम डॉक्टर्स यूज व्हाट? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. व्हाई? बिकॉज द डिजीज़ पैथोजन इज़ नॉट आइडेंटिफाइड. डिजीज़ पैथोजन हम लोगों को पता नहीं है, बस सिम्टम्स है. तो एट दैट टाइम दे विल यूज व्हाट? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. So whenever a pathogenic microorganism is definitely known, the narrow spectrum antibiotic is used. If in lab test
लैब टेस्ट में इफ़ यू आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन और बैक्टीरिया, एट दैट टाइम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड. Example is penicillin, gentamicin, erythromycin, etc. Okay, erythromycin, gentamicin, all these are used for normal viral infections. Now next is penicillin. Penicillin is a group of antibiotic obtained from fungus. Penicillin is used for controlling the infections such as bacteria like streptococci, clostridia, streptococci, etc. ये सब जो bacteria है, streptococcus, clostridia, streptococci, this will produce some kind of respiratory infection. Okay, medicine containing penicillin are used to treat certain bacterial infection of ear, nose, throat, skin, as well as diseases like pneumonia and scarlet fever. Okay, infections of what? Ear, nose, throat, skin, pneumonia, and diseases like pneumonia and scarlet fever is treated with the help of penicillin. Now caution और precautions. Antibiotics लेने के वक्त हम लोगों को क्या precautions लेने चाहिए? See, antibiotics should be taken only when prescribed by doctor. Without doctor prescription, you should not take any antibiotic. Don't purchase any antibiotic from medical store without prescription from doctor, right? Don't consume antibiotic on your own to treat common diseases like a throat infection, common cold, or influenza, which is very common habits. Like if you have any throat infection or common cold or anything, you will use any antibiotics, which is wrong. You should not use antibiotics without prescription of doctor. Even if you feel well before completing prescribing course of antibiotic, you must continue and complete it. Okay, you should complete your antibiotic course. Don't suggest to others the antibiotic which were useful to you. जो एंटीबायोटिक्स हमारे लिए यूज़फुल थे वो एंटीबायोटिक्स हमें दूसरों को सजेस्ट नहीं करने. ओके, नेक्स्ट इज अभी तक हम लोगों ने यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे हैं. नाउ वी विल सी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉजेज डिजीज. ओके, यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या थे? लैक्टोबैसिलाई और राइजोबियम, राइट? राइजोबियम. Now harmful microorganisms, we will see harmful microorganisms. So harmful microorganisms is fungi. Now see, fungi is microscopic spores of fungi are present in the air. If there is sufficient moisture, spores germinate to cotton fabric, gunny bags, leather, wood items, etc. This fungi so fungi, you will see fungi is on what? Cotton fabrics, gunny bags, leather, wood items, etc. if they get wet due to moisture. The fungal hyphae, fibers of fungi, penetrate deep into the material to obtain nutrition and produce and reproduce. This causes the material to wear and become weak. Okay, because of accumulation of fungi के accumulation की वजह से क्या हो जाता है? any material like cotton fabric, gunny bags, leather, wood, etc. all this become weak. Okay, as a result, gunny bag, leather items like shoes, purse, belts, etc. on which fungi have grown do not last long. Okay, wooden items also get spoiled. Sometimes you may have noticed a black powder or white disk floating on pickle or murabba when a jar is opened after long time. What is that exactly? That is fungus. Okay, that white powder or that black powder or white disk around pickles or murabba is fungus. If it is, various species of fungi grow on food items like pickle, murabba, jam, sauce, chutney, etc. They use the nutrient in this food item for growth and reproduction. Okay, so fungi जो pickles, मुरब्बा, जैम, सॉस, चटनी पे ग्रो होते हैं वो क्या करते हैं? ये सब फूड आइटम्स यूज़ करते हैं किसके लिए? ग्रोथ के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए. During this activity, fungi releases mycotoxins, certain chemical poisons in the food, and thus food become poisonous. Right? फंगस जब ग्रो होता है तब हम लोग फंगस वाला फूड नहीं खाते. क्यों? बिकॉज ये फंगस क्या करता है? ये mycotoxins which is a poison,
ओके, विच इज़ अ सर्टन टाइप ऑफ केमिकल पॉइजन, वो रिलीज करता है फूड में, बिकॉज ऑफ विच फूड बिकम्स पॉइजनस. ओके, हेंस द फूड ऑन विच फंगस हैव ग्रोन कैन नॉट बी ईटन. राइट. So next is Clostridium. Sometimes cases of food poisoning occurs due to community feast. How does the food become poisonous all of a sudden? The bacteria which spoil cooked food are Clostridium. Food poisoning किससे होता है? With the help of due to this Clostridium. Food poisoning Clostridium की वजह से होता है, which is a bacteria. Out of 100 different species of this bacterium, some are freely living in soil, whereas some lives in alimentary canal of humans and other animals. Now what do you mean by alimentary canal? Alimentary canal is the passage which starts from your nose to intestine. Okay, your nose, mouth, esophagus, trachea, okay, stomach, large intestine, small intestine is called as alimentary canal. So Clostridium कहाँ पे present होता है? They are free living in soil. Sometimes it can be present in soil also, and sometimes in an alimentary canal of humans and other animals. Okay, these bacteria are rod shaped, produce bottle shape endosperm in adverse condition. ये कैसे होते हैं? रॉड शेप के होते हैं. ओके, वन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस बैक्टीरिया इज दैट दे कैन नॉट विथस्टैंड द नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल ऑफ एयर बिकॉज दे ग्रो इन एनारोबिक कंडीशन. See, first characteristic of this bacteria is they are rod shaped, and second characteristic is that they are anaerobic. Okay, they are anaerobic means they can reproduce and grow without help of oxygen, or they can function without help of oxygen. They do not need oxygen for their functions. Okay, so other harmful microorganisms. Other kinds of microorganisms like bacteria, virus, protozoa and fungus are also responsible for different diseases that affects humans. You have learnt about viruses which are smaller than bacteria and can grow and reproduce only in living cells. Okay, viruses पता है सबको, right? And latest जो चल रहा है कोरोना वायरस, everyone is aware of virus because of this coronavirus, right? So these viruses are smaller than bacteria. Virus bacteria से small होते हैं size में and can grow and reproduce only in living cells. Let us see how they are harmful to us. Now we will see how they are harmful. Okay, see in this chart they are given name of some disease causing pathogens, mode of infection and prevention. मतलब डिजीज़ के नाम दिए हैं, किसकी वजह से डिजीज़ हुआ है, कैसे डिजीज़ हुआ है, एंड उसको प्रिवेंट कैसे करना है. ओके, नाउ सी, फर्स्ट डिजीज इज एड्स विच इज कॉज्ड बाय वायरस, HIV virus. Okay, AIDS is formed due to occurs due to what? HIV virus. Okay, mode of infection कैसे होता है? Through blood and semen of infected person and milk of mother suffering from AIDS. Okay, and how can you prevent AIDS? Safe sexual contact, avoid reuse of needles and injections. Okay, then hepatitis is also caused due to a virus, hepatitis. Then mode of infection is contaminated water and food. It can be caused due to contaminated water and food, means dirty water and food, and can be prevented by clean and filtered water, proper storage of food. Influenza is again a virus caused due to contact with infected person, personal hygiene and avoiding contact with infected person. How will you prevent influenza? By social distancing, right? Avoiding contact with infected person and personal hygiene. Measles and chickenpox is also a virus caused due to contact with infected person. Here there are some vaccines दिए जाते हैं बचपन में ही to prevent measles and chickenpox, and you can use uncontaminated water, means clean water and clean food. Okay, bird flu, H7N9, swine flu, H1N1. Okay, it is also caused due to a virus. Contact with infected birds and animals. Personal hygiene and properly cooked milk, right? Dengue is again a virus caused due to what? Mosquito bite, right? You can prevent it by cleanliness of surrounding, preventing stagnation of water and mosquito control, right?
निमोनिया किससे होता है? बैक्टीरिया की वजह से. Streptococcus pneumoniae, it is a bacteria. Okay. Droplets spread in the air by infected person. Okay. If the person sneezes, the droplet which has spread in the air, because of that the bacteria can enter into your respiratory tract and cause pneumonia. Vaccine is given and avoid contact with infected person. This is the prevention. Leprosy is also caused due to a bacteria. Long term contact with infected person, and you can prevent it by avoiding contact with infected person and their belongings. Okay. Next is cholera. Cholera is also caused due to a bacteria. It is caused due to contaminated food and water. Mode of infection is what? Contaminated, means dirty food and water causes cholera, and you can prevent it by using clean food and water. Malaria is caused by a protozoa, again due to mosquito bite, unclean surrounding. And prevention is what? Cleanliness of surrounding, preventing stagnation of water, controlling mosquitoes, same like that of dengue. Next is dandruff, ringworm and scabies, which is fungal infection, right? It is mode of infection is what? Contact with infected person or his or her belonging like clothes. Okay. And preventive measure is personal hygiene, avoiding contact with infected person. Okay. So students, please do like the video, and if you have any doubts or queries, you can ask in the comment section. Please share the video and also do subscribe Abhyas with the Professor. Thank you.